हेलो गाइस। आज हम लाए हैं चैप्टर क्लास 10th का चैप्टर 1 जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंग्स व्हाट हैपन्स व्हेन milk is left at room temperature during summers, an iron tawa pan nail is left exposed to humid atmosphere, grapes get fermented, food is cooked, food gets digested in our body, we respire. In all the above situations, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. We have already learned about physical and chemical change of matter in our previous classes. Whenever a chemical change occurs, we can see that a chemical reaction has taken place. You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. How do we come to know that a chemical reaction has taken place? Let us perform some activities to find the answer to this question. Activity 1.1 Caution. This activity needs the teacher's assistance. It would be better if a student wear suitable eyeglasses. Change a magnesium ribbon about 3-4 cm long by rubbing it with sandpaper. Hold it with a pair of tongs. Burn it using a split lamp or burner and collect the ash so formed in a wash glass as shown in figure 1.1. Burn the magnesium ribbon, keeping it away as far as possible from your eyes. What do you observe? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। लोहे के तवा अथवा तलसा अथवा कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अंगूर के किण्वन किण्वन हो जाते हैं। भोजन पकाया जाता है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। हम सांस लेते हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ में भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 1.1 सावधानी। इस क्रियाकलाप में शिक्षक का सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। लगभग 3-4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। इस चिमटे को चिमटे से पकड़कर लैंप या बर्नर में इसका दहन कराइए तथा इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लिए जैसा कि चित्र 1.1.1 में दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इससे अपनी आंखों या यथासंभव दूर रखिए। आपने क्या प्रशिक्षण किया? You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into a white powder. This powder is magnesium oxide. It is formed due to reaction between magnesium and oxygen present in the air. Activity 10.2. Take a
lead nitrate solution in a test tube. Add potassium iodide solution to this. What do you observe? Activity 1.3. Take a few zinc granules in a conical flask of or a test tube. Add dilute hydrochloric acid or sulfuric acid to this figure 1.2. Caution. Handle the acid with care. Do you observe anything happening around the zinc granules? Touch the conical flask or test tube. Is there any change in its temperature? From the above three activities, we can see that any the following observation help us determine whether a chemical reaction has taken place. Change in state, change in color, evolution of gas, change in temperature. As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. Chemical equation. Activity 1.1 can be described as when a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted to magnesium oxide. The description of a chemical reaction in a sentence form is quite long. It can be written in a shorter form. The simplest way to do this is to write it in the form of a word equation. The word equation for the above reaction would be magnesium oxygen, magnesium oxide, or the substance that undergo chemical change in the reaction. 1.1. Magnesium and oxygen are the reactants. The new substance is magnesium oxide formed during the reaction the as a product. A word equation shows change of reaction to products through an arrow placed between them. The reactants and are written on the left hand side LHS with a plus sign plus between them. Similarly, products are written on the right hand side RHS with a plus sign between them. The arrowhead points toward the products and shows the direction of the reaction. रासायनिक समीकरण क्रियाकलाप 1.1 का विवरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार होगा। मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड अभिकारक उत्पाद। अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिन्होंने रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। शब्द समीकरण में एक अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को अनेक मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर LHS लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग प्लस का चिन्ह लगा उन्हें दाईं ओर लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा दर्शाता है।
Writing a chemical equation. Is there any other shorter way of representing chemical equation? Chemical equation can be made or concise and useful if we use chemical formulae instead of words. A chemical equation represents a chemical reaction. If you recall formula of magnesium oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as Mg plus O2. MgO. Count the compare the number of atoms of each element on the LHS and RHS. LHS and RHS arrow is the number of atom of each element the same on the both side. If yes, then the equation is balanced. If not, then the equation is unbalanced because the mass is not the same on both sides of the equation. Such a chemical equation is a skeletal equation for the burning of magnesium in air. रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। Mg प्लस O2 तीर निशान के बाईं ओर और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? यदि है तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। Balanced chemical equation. Recall the law of conservation of mass that you study in class 9. Mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. That is the total mass of the element present in the products of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in their reactants. Same before and after a chemical reaction. Hence, we need to balance a skeletal chemical equation. Is the is the chemical equation 1.2 balanced? Let us learn about balancing a chemical equation step by step. The word equation for activity 1.3 may be represented as zinc plus sulfuric acid, zinc sulfated plus hydrogen. The above word equation may be represented by the following chemical equation: Zn plus H2SO4, Zn SO4 plus S square,
COH2. Let us examine the number of atoms of different elements on both sides of the narrow element: zinc, hydrogen, or sulfur, or oxygen. Number of atoms in reagents: 1, 2, 1, 4. Number of atoms in products: 1 to 1, 4. As the number of atoms of each element is the same on both sides of the arrow equation, 1.3 is a balanced chemical equation. Let us try to balance the following chemical equation: Fe plus H2O, Fe3O4 plus H2. Step 1. Tap to balance a chemical equation. First, draw boxes around each formula. Do not change anything inside the boxes while balancing the equation. Fe plus H2O equal to Fe 2O4 plus H square. Step second, list the number of atoms of different element present in the unbalanced equation. Element FeHO. Number of atoms in reaction 1 to 1. Number of atoms in products 3 to 4. Step third, it is often convenient to component contains the maximum number of atoms. It may be reactant or a product. In that compound, select the element which has the maximum number of atoms. Using this criteria, we select Fe3O4 and the element oxygen in it. There are 4 oxygen atoms on RHS and only 1 on the LHS. To the to balance the oxygen atoms of oxygen initial, second to balance in reaction 1 in H2O or 1 into 4 in products, 4 in Fa3O4 4. To equalize the number of atoms, it must be remembered that we cannot alter the formulae of compounds elements involved in the reactions. For example, balanced oxygen atoms, we can put a coefficient as 4H square O and not H2O4 or H2O4. Now the party balanced equation becomes Fe plus 4 H2O Fe3O4 or plus H square. संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व: आप द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है न ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्व के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में, रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान रहती है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। क्रियाकलाप 1.3 शब्द समीकरण के इस प्रकार दर्शाया जा सकता है: जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। उपरोक्त शब्द समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में दर्शाया जा सकता है: ZnH2SO4 ZnSO4 प्लस H स्क्वायर। आइए समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों परमाणु की संख्या की तुलना करें। समीकरण 1.3 में तीर के विनाश के दोनों निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान है,
इसलिए ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं।